मंगल सैवंथ सन यूट्यूब चैनल की टीम अज पहुंची है परथ दे उस स्थान ते जिथे इंडियन कम्यूनिटी ने अपनी ही एक बिल्डिंग बना के उहदे च इंडियन कम्यूनिटी सेंटर बनाया होया, जिहदे च आम तौर ते अलग अलग तरह दीयां गतिविधियां अक्सर हुंदियां रहिंदियां ने। ते अज तुहानूं दिखाउण दा टीम यतन करेगी कि ये संस्था जिहड़ी इंडियन लोगों ने इत्थे रह के तैयार की है, इत्थे की गतिविधियां हुंदियां ने, किस तरह है। इस नाल संबंधित चैनल के नुमाइंदे गल करनगे इस संस्था के प्रबंधकों के नाल ते अपनी जबानी ही वो तुहानूं दसणगे कि असीं की इत्थे कारज करदे हाँ। आओ उन्हां नूं मिलीए ते उन्हां दे विचार जाणीए। ये जो संस्था जिस विच अज मंगल सैवंथ सन यूट्यूब चैनल की टीम पहुंची हुई है, इस संस्था दे विच जो भी गतिविधियां हुंदियां ने और कौन इस नूं चला रहा है, ये सारा कुछ इत्थों के मुख्य प्रबंधकों विचों मेन मैंबर ये सारा कुछ अज जानकारी देंगे जी। नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। यहाँ पर्थ में भारत से आए हुए अपने इंडियंस, वो कोई 1 साल के लिए आता है, कोई परमानेंटली आ जाता है। ये सभी सीनियरों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम कर सके, इस अंदाज से हम 4 जगह पर सीनियरों का गैदरिंग एक्टिविटी चलाते हैं। इसमें सभी सीनियर सुबह 10 बजे आते हैं, चाय पानी पीते हैं, बाद में योगा करते हैं, मेंटल गेम खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, गीत संगीत खेलते हैं। भारत की अलग अलग भाषाओं में सारा गीत का भी कार्यक्रम हम करते हैं। और इसके अलावा इसको दोपहर को भारतीय ट्रेडिशनल खाना यहाँ मिलता है, जिसको सात्विक भोजन हम कहते हैं। इसके अंदर बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन से ये सब चलाया जाता है। और हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था और हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों मिलकर चलाते हैं। आज का ये जो इस्वा सेंटर में यानी कि इंडियन कम्युनिटी सेंटर में जो चलता है, वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के अंडर चलता है। मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ और हिंदू काउंसिल ऑस्ट्रेलिया का WA का चैप्टर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ऐसी 4 संस्थाएं अलग अलग जगह पर हम चलाते हैं, जिसके अंदर आज का ही जो कार्यक्रम है वो खास करके डेमेंशिया के संदर्भ में। तो डेमेंशिया अपने इंडियनों के अंदर अभी यहाँ काफ़ी बढ़ रहा है, वो उसको कैसे ना आए, कैसे डेमेंशिया ना आए, और यदि आया है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अपने सब सीनियरों के लिए ऐसी एक्टिविटी हम रेगुलर आज करीबन 2.5 साल से यहाँ इंडियन कम्युनिटी सेंटर में है। एक जो गुजराती समाज के अंडर से हम चला रहे हैं, उसको करीबन आज 20 साल होने वाला है। HCA की ओर से भी चला रहे हैं, इसको भी करीबन 3 साल से ऊपर हो गए। और दूसरा भी HCA के हमने सिटी ऑफ स्वान में शुरू किए, उसको भी करीबन 1 साल होने वाला है। इसमें भारत से आए हुए किसी भी जाति के, किसी भी भाषा के सीनियर है, वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर इस एक्टिविटी में यहाँ जब भी पर्थ में आए तो इस ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप मिल जाती है, सोशलाइजेशन हो जाता है, और उसको लगता है कि मैं यहाँ भारत में हूँ, तो उसको यहाँ रहने में मज़ा आती है। धन्यवाद। एक मगर ढूंढे न मिला, एक ही दुनिया की दीवारी, दिल मेरा चुपचाप जला। Round is finished. Now second round. Second round पहचान कौन। गाना बजेगा, पिक्चर में ये गाना किसने गाया है वो बताना है आपको, बोलना नहीं है। फटाक से पहले कौन से ग्रुप में हाथ ऊपर उठता है वही ग्रुप बोलेगा और उसका पॉइंट मिलेगा। प्यार किया कोई चोरी नहीं। Five points. पिक्चर कौन सा?
मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई नहीं। धीरे 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 जिंदगी भर न भूलेगी वो बरसात की रात। -5 -5 खिलौना यारी ईमान। यारी हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। जीना मरना। जी चाहे जब मुझको आवाज दो, तुम है अच्छी बात है। अच्छे टीचर सिंपल सवाल रखते हैं। दिल रमैया। जिंदगी सफर। अच्छा चलो। कौन सा वर्ड है? दुनिया ने दुनिया बनाने वाले। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे शुभ
कभी अपनी जोड़ी मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करूँगा ताकि सबकी समझ में भी आ सके, अगर कंफर्टेबल फील कर सके। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है हमारा डिमेंशिया के बारे में, एंड वी आर फॉर्चुनेट that we have got the right people in this room to come and talk about it. For that, I need to thank both City of Council, City of Kerry, and Dementia Australia. So Jane is from Dementia Australia, and the benefit is that she is going to talk. She's just like you and me in terms of the connection to the medical field. So in other words, she is not a doctor or nurse, but she is one of us, right? So that actually helps us, because we many times get doctors who have got it. That's also very important, and they give a different angle to the talk. This is more about the social life, how we deal with it, and what we can do about it. तो जस्ट रिपीट करूँगा मैं कि जैन हमारे साथ में आए जो डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया से है। वो हम लोगों की तरह बात करेगी और हमें बताएगी कि क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से हमें अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, पता कैसे चले कि ये है डिमेंशिया। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बातें करेंगी। और सिटी ऑफ कैनिंग से भी हमारे साथ है जेसिका, तो उनकी मदद से ये सब हो पाया है, तो हम दोनों के आभारी हैं। मैं फॉर्मली रिक्वेस्ट करूंगा दामजी भाई से और चंद्रकांत जी से कि आके उनका टोकन ऑफ अप्रिशिएशन किए। सो प्लीज कम जैन एंड जस्ट कम सी हियर। Also we have got fortunately Hamida Ben here is one of us. She is member of our senior group, but also she is a retired nurse, so she's going to help us with the translation. Hamida Ben थोड़ा बहुत जो भी बातें हो रही है उसका हिंदी में, गुजराती में थोड़ा बहुत बीच में बताते जाएंगे ताकि सबको कंफर्टेबली समझ में आ सके। इसके बाद में भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बाद में क्वेश्चन आंसर होगा, तो बीच में मत पूछिए। आप क्वेश्चन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो, और फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको सहायता मिल जाए। थैंक यू आप जी भाई। Thank you Jessica, thank you Damji bhai. And I'll request Chandrakant ji to please come or Jane from Dementiab Australia. Thank you very much. You look lovely, ladies. And please remember us with this beautiful scarves. So and do let us know if you need any other help. After having this, you are looking more beautiful, huh? Very much. I might just pass it to Jessica to start and talk a little bit about how this came about, and then we'll talk about what's going to come on the screen as well. Okay. Thank you, Jane, and thank you for having me here today. We were fortunate, the City of Canning, to receive a grant to raise awareness about dementia-friendly communities for community groups such as yourself. So those who might not know much about dementia can get a very beginner level on how to support members of the community living with dementia and carers. So if you want more information about what the city offers in this area, we have a dementia-friendly cafe that meets every second Wednesday of the month. And we also are starting a pole walking group. So if you would like to learn pole walking and get together at our local parks, you can come and see me during the break. I'll hand over to Jane. Thank you so much for coming along and for having us today. I'm just going to grab my water because I tend to get a bit of a dry mouth when not. We can maybe pass over to have some translation as well. So
it's again, as mentioned, I'm not going to say that I'm an expert, but I've had a lot of experience with people living with dementia. So I don't have necessarily a qualification in dementia, but for 20 years, I've worked with people living with dementia. And also my mum had it herself, my grandmother, and my great-grandmother. But, important, that's not necessarily hereditary. So it's not always genetically passed down. For my family, just an unfortunate coincidence. So we'll go into that a little bit more. And so we will be talking about dementia. Now, I like to start to find out, does anybody know the difference between dementia and Alzheimer's disease? Yeah, please. Okay, ladies and gentlemen, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर बोलूँगी, मगर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है दामजी भाई की तरह और ऊपर भाई की तरह, तो गुजराती वर्ड्स भी मेरे पास आएगा बिकॉज मैं गुजराती हूँ। मगर मेरे ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि जैन ने बोला कि हेरिडिटरी नहीं है, तो वो आपको पता है ना क्या बोलते हैं कि उसकी फैमिली में है, एक्सपीरियंस है, पर्सनल, और जिसको पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना कि क्या होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर और नर्सिस आपको बोलेंगे, मगर जिसके घर में हुआ है तो उसको उसकी माँ, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी फैमिली में सब हुआ था। अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो नहीं है, ऐसे नहीं होता कि जिसको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर होता है ना तो उसमें पास होता है। तो इम्पोर्टेंट वो है कि अगर किसी को अल्जाइमर हुआ है तो ऐसे मत बिना कि हमको भी हो जाएंगे, बच्चों को भी हो जाएंगे। That's one. Anybody? He was asking what is the difference between Alzheimer and dementia. या वो अभी जैन आपको बोलेगी कि क्या है और फिर मैं आपको ट्रांसलेट करूँगी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको पता नहीं था ना पहले भी, मैं लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि हम सबको ऐसे बोलते हैं कि उसको दिमाग की बीमारी है। अगर जैन अभी बोलेगी कि डिमेंशिया क्या है, अल्जाइमर क्या है, वो उसका एक्सप्लेन करेगी आप। Sort of, but not exactly. So I'll say it maybe in the best way to understand. Dementia is like an umbrella. So it's an umbrella with lots of, what are they called? The spikes under the umbrella. So that's dementia up here. Alzheimer's disease is a type of dementia. So one of the spokes, one of the things. Then there's all different types of diseases that sit under that umbrella, but up the top always is the word dementia, and it covers all of them. So it's a set of symptoms that are caused by these diseases in the underneath the umbrella. ओके, तो आप बोलते हैं कि हम सबको बोलते हैं कि उसको अल्जाइमर है, हम सबको ऐसे बोलते हैं, और सब बोलते हैं हम इसको डिमेंशिया है। तो वो क्या बोलते हैं जैन कि ये डिमेंशिया है ना, वो लाइक अम्ब्रेला, रेन की छतरी नहीं लगा है हमारे पास, ये है सबका, और इसमें तो सब आता है, अल्जाइमर आता है, दूसरी कोई दिमाग की बीमारी आती है, वो आपको बोलेगी, मगर हम सबको बोलते हैं ना, थोड़ा भूल जाते हैं तो बोलता है कि उसको अल्जाइमर है, कभी को बोलते हैं उसको डिमेंशिया है। तो वो बोलते हैं कि डिमेंशिया बड़ा नाम है और उसमें से एक बीमारी है उसको अल्जाइमर करते हैं, दूसरी भी बीमारी है मगज की, मगर वो दूसरी है, तो सब अल्जाइमर नहीं है। Okay, so if you can see the screen, it says dementia is the umbrella term that describes a set of symptoms caused by brain disease. But there's different types of brain disease. So there's typical signs, which normally you think of Alzheimer's disease, dementia, about your memory, people forgetting things. लगा है डिमेंशिया, और फिर ये चार है, दूसरा भी होगा, तो उसका वो सिम्टम्स कि उसके साथ क्या साथ होता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये अल्जाइमर है, ये क्या है। तो सबको मेमोरी की, माइंड की बीमारी है, मगर ये अभी इसमें साथ ऐसे है कि हमको पता चलता है कि उसको क्या है, तो वो अभी बोलेगी।
Yeah. So, yes, there's things not just about memory when we're talking about dementia. That's very common in Alzheimer's disease, but not always the other types of dementia. But a simple way to understand it, it's if you're having problems doing everyday things that you used to be able to do, it's possible that that might be something you need to have a look at because it could be dementia. But we can talk about that a bit more in a minute. It's also important that if someone you know has had dementia, that doesn't mean that the next person you know that has dementia is going to have the same symptoms or the same way of those symptoms coming out. Some people forget things, other people forget other stuff, other people have problems with walking, other people have problems with cooking, you know, so there's different ways. It's not just about your memory. And it's also important that it's not a normal part of aging. Not everybody that gets older is going to get dementia. Some people are a bit scared of that. You know, lots of people worry that as you get older, you're going to get dementia. But we'll talk about that a bit more. But it's important to know it's not a normal part of aging. Some people do, and some people don't. The people that do, they get it. It's not their fault. They haven't done anything wrong. It's unfortunate. Sometimes things happen in their life that then will increase their risk of getting dementia. Does that make sense? Yes. Okay, so क्या बोलते हैं कि दिमाग की बीमारी ऐसी है कि कुछ होता है हमको, तो अगर आप उसको देखो किसी को कि ये उसको ज़्यादा होता है, वो भूल जाते हैं और काम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो हमको ऐसे तो वार्निंग चाहिए कि उसको कुछ है, तो उसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। मगर हम ऐसे बोलते हैं कि अभी उसको दिमाग की बीमारी हो गई क्योंकि उसकी एज हो गई, अभी बुढ़ी हो गई है, तो उसको याद नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं एज में, वो सबकी मेमोरी कम हो जाती है। कोई किसी को तो कभी होती भी नहीं है, मगर किसी को ऐसे होते हैं कि वो नाम में भूल जाते हैं, खाना बनाते हैं तो भूल जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, मगर पता नहीं हमको कि उसको क्या होता है। तो हम ऐसे नहीं कहते कि ऐसे बोलते हैं कि उसको अल्जाइमर है क्योंकि अभी बुढ़ी हो गई, उसकी दिमाग ओछे गए और ये यंग एज है, तो सबको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ये फैमिली में ये बहुत ज़्यादा करते हैं, पहले नहीं करते थे। मगर उसका सवाल नहीं है कि ऐसे बोलना कि अभी बूढ़े हो गए तो हम उसको डॉक्टर के पास नहीं, आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि पता चले कि क्यों होता है। ओके। So, it might surprise you to know there's more than 150 different types of dementia. So not just Alzheimer's disease, not just what they call vascular dementia, dementia with Lewy bodies, and frontal temporal dementia are the four most common types. Why people often associate Alzheimer's disease or get it mixed up with dementia is because 70% of people who get the diagnosis are diagnosed with Alzheimer's disease. It's the most common. The next most common is vascular dementia. The next most common is dementia with Lewy bodies. And then the next most common is frontotemporal dementia, which is the dementia that Bruce Willis, you know the actor Bruce Willis, he has that type of dementia. So there's four most common types, and then there's lots and lots of other ones. For example, there's some dementia that's caused from drinking too much alcohol. There's some dementia that's caused from, there's unfortunately childhood dementia. Some dementia is caused from being exposed to too many chemicals. But all of them affect the brain and how the brain works. And because the brain has different parts, it depends where the damage is
as to what type of dementia and what symptoms you will have. Does that make sense? Yeah? It is a low-body disease. Okay, I'll go through these ones. Alzheimer's disease. Everybody's heard of that one. Simple way to understand it. If you picture your brain, inside your brain, you see lots and lots of not tangles, I guess you would call them, say wires or whatever you like. They run from one side of your brain to the other. They're all in there. What happens with Alzheimer's disease is you get plaque. Plaque like you get on your teeth, sticky plaque. This develops in these neurons that are in your brain, and it sticks to it. And one thing that happens sometimes when you're trying to do something, so say you're sitting and you need to stand up, you have to start your message to do that on one side of your brain. That message has to travel through and get to the other side so you know what to do. That means you've got to get up from the chair, move this part of your body to then get up and then walk. What happens with Alzheimer's disease is the plaque, it sticks, and then the message starts over here. It gets to a point. It hits the plaque, it can't get through. It can't make it to the other side, so it sometimes goes back to the start. And that's why people forget things, because the message is not getting all the way through. It comes back to the start and they say the same thing again. So they repeat themselves, often a lot of times. But then sometimes, maybe the message will get through, but it has to find a different way. And maybe that's not what it was supposed to do, and it'll come out a bit strange. So that's why you get some unusual things when people have Alzheimer's disease. And over time, the plaque gets more and more, and so there's less and less good brain left, and eventually people deteriorate and everything starts to shut down because the brain can't tell your body to do what it needs to do. So that's Alzheimer's disease. The next one, vascular dementia. Yes, please. Yes. Okay, so पहले तो इसने बोला कि अल्जाइमर अभी क्या है, तो ये मेन डिसीज है ब्रेन की, ये 4 उसने लिखा है. अच्छा, तो अभी ये 4 है, और दूसरा मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये अल्जाइमर डिसीज है नया है, तो ये सब अभी रिसर्च करते हैं ना, तो उसको पता चला है. तो एक तो है अल्जाइमर डिजीज, उसको बोलते हैं मेन का. दूसरा है वास्कुलर, ब्लड के लिए कोई हेमरेज के उसका. और तीसरा है अनदर नया है, एंड थर्ड वन है टेम्पोरल फ्रंट का है, सो वो भी उसका है. मगर उसने क्या बोला जैन ने कि सिंपल आपके लिए अगर याद रखना है, तो वो इसने बोला कि हमारा ये ब्रेन है ने, उसमें वायर्स है, लॉट्स ऑफ वायर्स है, और ये वायर एक वायर से दूसरे वायर के साथ काम करता है, मैसेजेस भेजता है. अच्छा, तो एक उसको बोलता है कि अभी क्या करना है लेफ्ट साइड को, एंड देन राइट साइड को पता चलता है. तो हम अभी आप बैठे उधर कुर्सी पे, तो अगर आप कोई बुलाता है तो आपको पता चलता है कि अभी मुझे उठना है और उधर जाना है, मैसेज. तो ये अल्जाइमर में क्या होता है कि हमारे ये ब्रेन से ना, उसमें थोड़ा प्लाक हो जाता है. प्लाक क्या है कि हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना क्लीनिंग कराने 6 महीने के बाद, तो डेंटिस्ट साफ करते हैं, तो अंदर से वो वाइट कलर हो ना, वो निकालता है, और रोज हम ब्रश कर वो निकालते, मगर उसमें थोड़ा जमता है तो हम निकालते. तो ब्रेन में तो ऐसे नहीं कर सकते, वो तो उधर ही रहते हैं. तो क्या होता है कि ये प्लेक के लिए वो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचता. तो लेफ्ट साइड को ब्रेन अगर बोलता है कि अभी मुझे उठना है और उठकर उधर जाना है, तो हम करते हैं ना, तो हम उठते हैं, देखते हैं कि अभी किधर जाना है, कुर्सी पर से और जाकर उधर कोई बुलाते हैं तो हम उधर जाते हैं. तो अभी क्या होता है कि मैसेज जाता है कि अभी आपको उठकर टॉयलेट में जाना है, कि वो रूम में जाना है, मगर मैसेज उधर नहीं पहुंचता, तो वो उठ नहीं सकता.
तो इसलिए हम कभी आप देखते हैं तो अल्जाइमर पेशेंट हमको आपने बोला कि अभी हमको जाना है सीनियर में, तो आधे घंटे के बाद वो वापस पूछेंगे क्या जाना है, हम बोले हमने बोला नहीं अभी सीनियर में जाना है, कल हमको डॉक्टर के पास जाना है, तो हमको याद रहेगा कि हमको जाना है कल, उसको नहीं पता चलता, तो वो पूछ करते हैं कि अभी क्या जाना है, तो वापस बोलते हैं वापस, क्योंकि वो मैसेज उसको एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं गए और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बड़ा हो जाता है ब्रेक, तो उसको पता ही नहीं चलता. ओके, I think maybe do a bit slow so Of course, then sure. So, in the same way as Alzheimer's disease has the plaque, vascular dementia is caused by having a stroke. You know, a stroke where the oxygen doesn't get to your brain, and unfortunately some parts of the brain where the oxygen didn't get to, it dies. And so when the message, it tries to start here, but if it gets to a part of the brain that's died, it kind of falls into a hole and it can't get back out. So it'll go back to sometimes go back to the start. So similar symptoms to Alzheimer's disease in that you just might forget things. You can't necessarily start to finish the action that you tried at the beginning. But it also, once you've had those strokes, sometimes more and more of them happen, and you don't always know they're happening. Sometimes they happen and they're little ones, but each time they happen, more parts of your brain die. But it's from a lack of oxygen. And so that's why it's really important as you get older to keep being physically active, because that helps to bring oxygen to your brain. Lewy body disease. Have you heard of Parkinson's disease? Parkinson's is where you have movement problems. So Lewy body disease is associated with Parkinson's and it has a lot of symptoms. So people with Lewy bodies type of dementia, they don't always have problems with their memory. They get hallucinations, the same. So it's a funny thing, they're like little pieces of plaque. Instead of sticking, they float around in your brain, and sometimes they settle, and sometimes that means people see things that are not really there. And they often have problems with movement, just like Parkinson's disease. Some people with this one, they end up getting Parkinson's disease. Some people start with Lewy bodies or the other way around, they start with Parkinson's and then they develop Lewy bodies. And the last one, the frontotemporal one, like I said, this is Bruce Willis, the actor, he has this one. It's this front part of your brain, and it's where you know what's right or wrong to do in, say, a group or when you're socializing. When that part of the brain is affected and damaged, it can mean that you don't know what's okay in a place. You might take your clothes off when you're here at this group, because that part of your brain that tells you what's right, it's broken. So you don't know. Sometimes if you've ever been in a nursing home, in the aged care, and you see sometimes people are not always the calling out people, but maybe they're people that, they don't understand what they're saying is not okay. So sometimes they might say the wrong thing, and sometimes men will say to ladies, maybe they want to say you look pretty, but they can't work out how to say that, so they might say something a bit inappropriate, almost a bit sexy sometimes,
but they're not trying to do that on purpose. They do it because it's damaged and they're trying to communicate. And the way they do that is to tell you look pretty, but maybe they say they want to do something else. That's right. Yes. Yeah. Okay, so bit too much for but also मैं भूल गई आपको बोलने का कि उसने पहले बोला कि पता नहीं कि क्यों होता है मगर टू मच अल्कोहल ड्रग पीते हैं तो उससे भी थोड़ा दिमाग हो जाता है कभी कभी पता नहीं है मगर होता है एज का दूसरा सो कोजेस अभी तक पता नहीं है एग्जैक्टली पर अल्कोहल टू मच एक्सेस वो भी पार्ट ऑफ होता है उससे भी मगज थोड़ा खराब हो जाता है ओके अभी दूसरा क्या किया कि ये 4 है अल्जाइमर तो हमने बोला ना कि ये सारा दिमाग की डिजीज है मगर उसमें फर्क है कि दूसरा है एक ब्लड का है तो ब्लड में जब भी मैंने बोला ना कि अभी आपको होता है क्लॉट हो जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है ना वैस्कुलर तो उस समय भी होता है मगर मेन थिंग इज द ऑक्सीजन हम जब ब्रीथ करते हैं ना हवा हमारे मगज में जाते हैं बॉडी में जाते हैं हार्ट में जाते हैं हम सांस लेते हैं सांस निकाल बाहर जाते हैं तो ऑक्सीजन फ्रेश होती है तो वो हमारी ब्रेन में जाती है तो उससे भी थोड़ा कम हो जाता है तो ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो उससे भी कभी कभी दिमाग के होता है मगर ये उसने वास्कुलर बोला तो उसमें तो जब भी हेमरेज होता है क्लॉट होता है ब्लड का तो वो क्लॉट ट्रैवल करते हैं ब्रेन में जब भी हार्ट में करते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है तो ब्रेन में जाता है तो उसलिए वो छोटा क्लॉट कभी बर्स्ट हो जाता है टूट जाता है तो उससे भी थोड़ा वो ब्लड और ब्रेन है ना तो वो स्प्रेड जाता है इसमें हो जाता है तो ऑक्सीजन के बिना ब्लड जाता है विच इज एबनॉर्मल नॉट राइट तो उससे वो पार्ट है ना तो ब्रेन डेड हो जाता है तो उसमें अभी फंक्शन नहीं कर सकता ये पार्ट तो हमारा तो सारा होल ब्रेन है तो उसमें से पार्ट ऑफ द ब्रेन वो काम नहीं करता और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें ब्लड ज़्यादा है क्लॉट और ज़्यादा हो जाता है तो एक फंक्शन काम ही नहीं कर सकता दूसरा ही करता है तो किसी को कभी नाम याद नहीं रहता किसी को पता नहीं कि वो किधर है और तीसरा है लुई बॉडी का तो उसमें सेकंड में से थर्ड में जा सकता है ओके तो वो भी थोड़ा फंक्शन नहीं करता है एंड द लास्ट वन द फ्रंटल पार्ट ऑफ इट तो ईच पार्ट आपको पता है कि ब्रेन का फंक्शन होता है दूसरे का खाने का स्मेल का होता है ना तो एक एक बंद हो जाता है ना तो वो पता नहीं चलता तो इसमें से इतना बुरा हो जाता है कि नाम तो भूल जाते फिर स्लोली हमारा मसल्स में वो हो जाता है तो पार्किंसन बीमारी आती है ना कि उसका हाथ ट्रेमर होता है ना तो वो भी हो जाता है और ऐसे हमारा एटीट्यूड हम आपको पता है कि इधर आप बैठे हैं तो आपको क्या करना है तो वो लास्ट में है ना तो फ्रंटल में इतना हो जाता है कि वो ऐसी बात करता है कि वो हम बच्चे नहीं करते ऐसे कर लेते हैं कभी हम कपड़े निकाल देते हैं कभी के साथ गंदी बात करते हैं एंटी सोशल बोलते हैं ना कि हमारी ये एज में बच्चे कभी करते हैं तो हम उसको पढ़ाते हैं फिर हमें एल्डर होते हैं हमको पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है फिर हमें बूढ़े हो जाते हैं तो कभी बोलते हैं कि अभी तो ये बूढ़े हो गई है ना उसको पता नहीं कि क्या बोलते हैं इसलिए उसने अच्छा नहीं बोले हमको कोई बोलते हैं नहीं कि खाना कैसा है तो हमको पता है कि बहुत अच्छा नहीं तो हम तो ऐसे नहीं बोलते नहीं कि नहीं अच्छा नहीं है तो कुछ के सामने ऐसे बोल देते हैं कि बुरा लगता है किसी को औरत के सामने हम इसको प्रेस करते हैं तो पीपल डू दिस थिंग्स पता नहीं है मगर दूसरे को खराब लगता है सो हम उसको एंटी सोशल बोलते हैं कि जिधर बैठना है आप इधर बैठे हैं हमारा टॉक सुन रहे हो कभी किसी को ऐसे लगता है कि ये तो इतना बोरिंग है मुझे नींद आती है मगर आप सो तो नहीं जाते ना क्योंकि आप बैठे हैं आपको ऐसे करना चाहिए कुछ तो ऐसे हम करते हैं फॉलो करते हैं क्या करना है तो ये एज में ऐसा करता है कि पता नहीं चलता तो ऐसे होता है ओके So, at the moment in the world, every 3 seconds, someone gets a diagnosis of dementia, and in Australia, it's 250 people a day. It sounds like a lot, but when you think how many people we have in Australia,
26 million now. It's a lot, but it's not everybody. It's not as much as we think. Now in Australia, about 400,000 people have a diagnosis, but again, 400,000 out of 26 million, it's not that much. Is it higher in our country compared to other part of the world? It's higher worldwide. It's higher in Western countries. Western countries. Yeah, because we don't have as good. Sometimes it's about the food and like the healthiness of your whole body. Okay. Yeah. I'll just tell them now. Yeah, of course. Okay, so अभी ये बीमारी है नहीं है, पहले भी हमको पता नहीं था कि क्या है, मगर अभी भी बहुत रिसर्च नहीं किया है, मगर हमारे ऑस्ट्रेलिया में अभी देखो तो एक इधर can you put the first one? Yes. Sure. Yeah. अभी देखो every 3 सेकंड में एक पेशेंट को डायग्नोसिस, तो कितने घर पे हो गए किसी को पता नहीं है, वो तो डॉक्टर को किसी को भी पता नहीं है, मगर डायग्नोस मीन्स के वो डॉक्टर के पास गए थे, उसको टेस्ट किया और अभी पता चला कि उसको 3 सेकंड में एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ. अच्छा, इन द वर्ल्ड डेवलप्स या, तो वो दुनिया में, और 250 ऑस्ट्रेलिया में है एक दिन में, each day. Or did you say Western Australia is good high? No, that's a Western. और वो कहते हैं कि Western country में ज़्यादा है, इसलिए शायद हम इंडिया में थे और दूसरी कंट्री में पता नहीं था, किसी को पता था कि डिमेंशिया और अल्जाइमर है, हमको तो कभी पता नहीं था. इंडिया में थे हम, अफ्रीका में थे, हमारे एल्डर पीपल थे, तो ये बीमारी हमारे लिए हमारे कल्चर में तो नहीं है. तो वेस्टर्न कल्चर में पहले से हुई थी, और वो बोलती है, जैन कहती है कि उसका रीज़न चाहिए, मे बी फूड खाना ऐसे डिफरेंट है इसलिए, और उधर रिसर्च पहले किया था, हमको पता नहीं था, हम डॉक्टर के पास गए नहीं थे, हमको पता नहीं है कि क्या हुआ, मगर सारी दुनिया में है, मगर वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा है, पर हमको पता नहीं कि क्यों, और वो अभी बोलेगी कि वाई, कि क्यों है. But excuse me, don't you think 250 people each day is very high? Yes. Yes, it's high, but you remember. The day will come when everyone will be suffering from the dementia. No, I'll show you. Also, Jen, Yeah. maybe because we did not go to the doctor to complain. Yes. हमको पता नहीं है, क्योंकि अगर हमको हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की, तो हम चले जाते डॉक्टर के पास, मगर वो हमको पता ही नहीं था कि ये बीमारी है, और हम क्या कहते हैं कि हमने ऐसे सोचा कि ये नॉर्मल है, कि हमारे ये उसको है, तो पता नहीं है कि क्यों, बिकॉज रिसर्च को भी पता नहीं है कि क्या है, सबके लिए नहीं है, हमारे लिए तो डेफिनेटली नहीं है. तो अभी वो हमको बोलेगी कि 250 हमको तो ज़्यादा लगती है, आपने बोला इसलिए, पर मे बी डायबिटीज ऑल्सो इज दैट हाई ब्लड प्रेशर इज दैट हाई. पता नहीं है हमको, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर उसके लिए मे बी वी डिडंट गो टू सी द डॉक्टर इन द फर्स्ट प्लेस, सो स्टिग्मा और व्हाटएवर इट इज. सो या, इट इज फेयरली न्यू, isn't it? Yes. Okay. And you know what? The highest risk factor is age. So the older you get, the more risk you have. And so when you think that maybe there's lots more dementia than there used to be, it's because people live longer nowadays. And so, and sometimes in Western culture, people they go to the doctor more. They extend their life physically, but they're not always extending their life mentally. So that's some of the risk factors. If you don't socialize, if you don't connect with people, you're more. Yes, isolation. Yeah. And what about Jane? Also, the different way culture living. Yes. Like we have more extended family. Yes. And sometimes you don't notice the person is doing that. Yes. And it could be have done for a long time. That's right. So बोलते हैं कि हम किसी को भी पता नहीं कि हमारे कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में डिफरेंट वे से होते हैं,
कि हमारे घर में कोई हमारे बूढ़े रहते वडील तो वो करते थे, मैं भी 1 साल 2 साल गए, अब हमको पता भी नहीं चलता, और अगर पता चलता तो कौन ले जाए डॉक्टर को के पास, हमारे ऐसे होता है ना कल्चर में, तो हम उसको नहीं ले जाते। हमारे दूसरा एक सीनियर है उधर, जब भी उसको किसी को भी ऐसे हुआ है अल्जाइमर का, वो सीनियर में भी नहीं आते, उसको घर पे रखते। तो वेस्टर्न कल्चर लोग ज़्यादा जाते होंगे डॉक्टर के पास, कुछ हमको कुछ पता नहीं है, एवरीथिंग इज नहीं है, ओके। In yoga, it is connected to the emotional distress. Yes. Yeah. If there are more emotional separation and more emotional incompatibility, Yes. it leads to rapid memory injury. Yes, Yeah. yes, it does. Yes, Yes. absolutely. And these are the things that in Western culture they don't always recognize that. So they look for sort of external a fix for something from something else instead of from inside. And sometimes I think too in non-Western cultures, if someone develops dementia, the culture and the people are more accepting and they don't always see it as a problem. And if it's not causing a problem, it doesn't, then that's fine, that's okay. You just accept the person for who they are. But in Western culture, they might say, this person is not who they are, who they used to be, we need to fix it. But you can't fix. And if they live separately and you want to Yes. visit once a week Yes. to our elders, then you would notice in the Western culture more. Yes. With us, That's right, because you're yeah. seeing people every Yeah. day. Yeah. Yeah, yeah, it's The true. nuclear family lead to more emotional distress. Yes, yeah, Yeah. yeah. Somebody's We need got a it. question Yes, there. please. मुझे वो वर्टिगो और ट्रेमर है, फुल बॉडी शेक, सो इट्स फ्रॉम माय मदर से मिला है हेरिडिटरी में। Yes. तो क्या डेमेंशिया उससे हो सकता है आगे ऊपर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं भूलने लगी हूँ कि नेम नहीं याद रहता, और कुछ लेने जाती हूँ कुछ लेकर आती हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है। तो एज के लिए हुआ है ये सब, डेमेंशिया के लिए होता है, ये डॉक्टर ही पे निकालेगा ना। तो मुझे जानना है कि मुझे हो सकता है कि नहीं ऐसा। Not necessarily is that going to lead to anything else. Yeah, she's still under the investigation. Yeah. But because her mother had it, Yes. and she's moved here now. Yes. So she's getting the test, the diagnosis is not being confirmed. Okay. And she's just doing it. But she's getting worse and she's memory and the Okay. tremor is still. It's possible, but not guaranteed. Okay, so it could be okay. It might just be the physical. Yeah. Okay. अगर कोई रिलेवेंट है इमीडिएटली क्विक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ये डिस्कशन करना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन सबको क्वेश्चन आंसर का चांस मिलेगा, तो हमारे पास काफ़ी समय है, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और दूसरा, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है आपके खुद के बारे में, तो बेहतर होगा कि आप इंडिविजुअली आके पूछ सकते हो, क्योंकि सब लोग को कंफर्टेबल नहीं लगता है सबके बीच में बोलना, वो आपकी पर्सनल मैटर है, आपकी प्राइवेट बात है, ये जरूरी नहीं है कि सबको पता हो, ठीक है। तो बाद में भी पूछ सकते हैं, आप कंफर्टेबल है तो पूछ भी सकते हैं, तो लेकिन क्वेश्चन आंसर थोड़ा बाद में करेंगे। पहले इनका जो फॉर्मेट है, अभी कुछ स्लाइड्स बाकी है, वो खत्म हो जाने में शायद आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें आ भी जाए। There is in City of Canning right now, and that's all across City of Canning, 1,483 people who have acknowledged that they have the diagnosis. That's through the census. So if the question on the census, they tick it, but there's probably more, because some people don't like to say, and maybe they don't know yet as well. Is your population in Canning multicultural or? Yeah, really multicultural. Yeah. Jessica's talking, but yes, it is. Yeah. It's one of the. I think City of Swan is more multicultural, but maybe Canning is right up there Yeah. in terms of
of multicultural. तो ये नंबर है ये काउंसिल स्टर्लिंग का है और वो काउंसिल में हमारे डिफरेंट मल्टीकल्चरल कैनिंग काउंसिल एंड वो स्टेट में वो शहर में quite a few lots of multicultural people रहते और स्वान में you said Swan is the highest, isn't it? Yeah, I'm pretty sure Swan is Swan, that right? yeah. Jeff, yeah. So, And Canning is about second or third? Yeah. So pretty high for multicultural. Yeah. I know I read some statistics about Mirrabooka, for example. In the whole of Australia, Mirrabooka has the most different cultures. Yes. That in the one, so that's 160 or Yeah. something like that. It's Yeah. it's a lot. So yeah. it could be they came with it, we don't know. Yeah. We don't know anything. That's yeah. right. Yeah. So, very interesting. Yeah. It's also important to remember, and probably within your own communities, it's not always the natural thing to put people into aged care. And it's not necessarily the best place for someone living with dementia, even more so from a multicultural community. It's really important for people to stay connected with the community, with their language. Often they forget or they go back to their first language, and if they've learned English or another language after their first language, when your brain is damaged and it's a bit broken, you're going to go back to something you learned when you were little, when you were a young person. Yeah. So अभी हमारी है ना ऑस्ट्रेलिया में फैसिलिटी ज़्यादा भी नहीं है कि हम हमारी कम्युनिटी को नर्सिंग होम में रखें. तो ये भी अब हमारा प्रॉब्लम है बड़ा कि हम जे कंट्री में से आते हैं उसमें से हम फेमिलियर है. तो जब भी हमारी एज होती है ना तो हम हमारी लैंग्वेज से हमने पढ़ा हमारी मातृभाषा में वो ही हमको वापस याद आती है. अभी अल्जाइमर हो या ना हो, डिमेंशिया अभी भी आप बोलोगे कि तो आपको ऐसे कभी कभी हमारी लैंग्वेज में ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बोलने लगते हैं. ऐसे लगता है ना, हमें इंग्लिश सबको हमको आती है मगर एज हम बड़े होते हैं एज में तो हम वापस बैक हमारी मातृभाषा में जाते हैं. तो वो भी है कि अगर नर्सिंग होम में कोई नहीं है फैसिलिटी तो हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है कि उसको कैसे ध्यान रखें. It's probably more of your children work in the nursing homes than actually, your family members will actually live in the nursing home, which that's a good thing. I used to work in a nursing home and there's, lots of multicultural staff. One place I worked, 70% of the staff were multicultural, Yes, and there's only 30% of Yeah. people born in Australia, either, for Anglo background there. It taught me lots of things about lots of different cultures. Yeah. But it's good to remember when we're talking about dementia, if you're under 80 years old, the average one person in 10 will develop dementia. That's not that much. One person in 10 under 80. Over 80, it's only 3 in 10. So you can look around the room, 3 in 10 people, once they turn 80 and on, will develop dementia. That's not that many. It means 70% of people over 80 won't get dementia. So that's good. Good statistics. Good news for a lot of people, because if you worry that you think it's going to happen, it's not always going to happen. 3 out of 10 over 80, it's good statistics. So 70% हमारी एज जब भी होती है 80 years, we can live happily क्योंकि वो सबको अल्जाइमर नहीं होता. So 80 years 90 भी हो जाती है हमारे तो अच्छी रह सकते हैं. तो बहुत कम को अल्जाइमर होता है. So not to worry, अभी घबराना नहीं कि सबको अल्जाइमर है. Okay. But there's also things you can do. Yeah, there's things you can do to reduce the risk. Okay, so 40% of risk factors you can change.
You can modify them. Right. And some of them we'll just look at now. I'm just going to skip a couple of things so we can get to them. I'm going to go backwards instead. Okay. These are some things that you can change to reduce your risk. So if you don't want to be one of the 3 in 10, you do some of these things. So you keep moving. Physical activity. Like we said before, it helps oxygen get to your brain. Very important. Stop smoking. If you've been smoking, the sooner you stop, the better it is, because the smoking doesn't let oxygen get to your brain as well. It impacts that. Don't drink too much alcohol. Some people say no more than 2 drinks a day. 14 drinks a week. Anything more than that is a bit too much. Air pollution. So if you can get fresh air, if you can be outside, you can be in nature, and you're not maybe hopefully living near anything too many chemicals and those sorts of things, the fresh air is good. Try not to have a head injury. Head injury, the risk then you're going to damage parts of your brain. Social contact. Now look at today. Yeah, it's beautiful. All of the people here together, you're all talking, you're interacting, you're looking after each other is very important. It's almost the most important thing. People who live alone, if they get dementia, their dementia goes, or their life is worse when they don't have people around. But sometimes you can't fix it, you can't turn back time and get where you were before you got dementia, but you can slow it down so you don't end up in the end point sooner than you need to. Education, it's really good, very important. You keep learning, keep stretching your brain, keep interested in things, and like keep even things like dance and music and all of those sorts of things, because they stimulate your brain. Yeah, anything you used to do, keep doing it. And if you physically hard, you try to change it a little bit so you still can do some of it. If you can't dance standing up, you can dance in a chair. If you can't play your instrument or whatever it is, or you can't cook standing up, maybe you can do something to remain connected. It's very important to not just say, I'm getting old now, I should stop. Just keep going. If you haven't retired yet, keep working. It's good for your brain. So obesity. It's not good. It's not good to be overweight and not eat the right foods and not exercise. Hypertension, that's high blood pressure. So if you're worried about that, you can see the doctor, maybe do something about that as well. Diabetes, if you're not feeling good in your brain, if you're feeling depression, sad, all of those things, there's things you can do about that. And it's almost like the more sad you feel, it becomes a way of being, and then you isolate yourself from other people, and then your risk goes up. And the last one is, if you've got problems with your hearing, it's good to get them checked out, because funny things happen when you can't hear and your brain tries to work out what someone's saying, and your brain has to work very hard, and you don't always work it out, but it stresses your brain, and so that can increase your risk. Just like the gentleman was talking before about yoga and being, in the moment, having acceptance within yourself. All of these things are very important to keep your brain healthy. Jane, these are all the things we talk about, even for prevention of the
हेल्थ जनरली। अगर डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और पढ़ते हैं तो ये सारा लोग से ऑल द पॉइंट्स इज द सेम फॉर एवरीथिंग टू कीप योर सेल्फ। हमारे ऐसे कैसे रखो कि हम सब अच्छी तरह रह सके। हाँ, तो अल्जाइमर में और डिमेंशिया में भी ऐसे है कि ये सारी एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी को डायबिटीज है ऑलरेडी और ये अभी नहीं करते फॉलो, तो उसको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है कि डायबिटीज और ओबेसिटी, तो हम ओबेसिटी है, ओवरवेट है, और फिर हार्ट की बीमारी है और ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है, और फिर अल्जाइमर भी हो जाता है तो उसको वर्स होता है ना। तो इसलिए हमारे लिए सेहत को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है। तो नॉट ओनली फॉर दिमाग की बीमारी, कोई भी बीमारी अगर आपको है तो ये सारा हम एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, तो इस गुड हमारे लिए अच्छे है, क्योंकि हमको फ्रेश एयर भी मिल जाएगी, बाहर वॉक भी कर लेंगे, किसी कोई मिले तो हम उसके साथ बात भी कर लेंगे, तो ये सब हमारे लिए अच्छा ही है। तो डोंट वेट, ऐसे मत बोलना कि अभी मुझे अल्जाइमर नहीं है तो अभी मुझे ये नहीं करनी है, अभी मुझे तो सब याद रहता है, मेरी मेमोरी अच्छी है तो मैं अभी कंप्यूटर में बैठकर बस वही करूँ, नहीं। क्योंकि आप देखो सारे स्मोकिंग, तो स्मोकिंग अभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वजन भी आपका अच्छा है, मगर स्मोकिंग करते हो तो वो स्मोकिंग के लिए हमारे लिए ये सारे डिजीज इफेक्ट करते हैं ना। अल्कोहल 2 वीक में एक दफ़ा इज ओके, नॉर्मल 14 इन अ वीक, उससे ज़्यादा लोगे तो आपके सेहत के लिए अच्छे नहीं है। ओके, तो दैट वन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पैसा जाएगा अल्कोहल के, दूसरा आपको बीमारी होगी, चल नहीं सकोगे। तो अभी हम देखें तो ये सारे हमारे लिए कुछ भी बीमारी है या नहीं, टू गो एंड फॉलो देम अच्छा है हमारे लिए। दूसरा एयर पोल्यूशन, सब बोलते हैं कि फ्रेश एयर बाहर मिलता है, घर में ऐसे बैठ जाओगे, बाहर नहीं जाओगे तो हमारा ब्रेन को भी हो जाए, डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन किसको आता है कि वो अकेले घर में रहते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते, उसको होता है ना। अगर बाहर जाओ, इधर सोशल में आओ, तो फिर हमको थोड़ा अच्छा लगता है ना, 2 घंटा 3 घंटा, तो हमारे लिए अच्छा है। अभी दूसरा क्या बोला उसने, एजुकेशन। अगर हमको पता ही नहीं होता, आज अगर हम नहीं आते तो हमको किसी को पता नहीं कि ये क्या है। हमको तो बोलते हैं कि हमको दिमाग की बीमारी है, और किसी को होते हैं तो हम उसके साथ बात नहीं करते। तो एजुकेशन, जितना आपको अवेयरनेस पता चले तो वो आपको एक्सेप्ट करो, जाओ पढ़ो, लाइब्रेरी में जाओ, किसी को पूछो। हाई ब्लड प्रेशर जिसको होता है तो उसके लिए अच्छा नहीं, हमको डॉक्टर ने भी बताया है। तो उसके ये सब अब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डिप्रेशन अगेन सेम, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, अगर होता है घर में होते हैं तो हम वही कहते हैं, वो मुझे अभी वेट की बीमारी है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं अकेली हूँ घर में, मैं दुखी हूँ, तो वो आपको चांस मिलता है ना, तो वो मगज का मिलता है, और हम सुन नहीं सकते, तो आपको पता भी नहीं चलता। आप उधर बैठे घर, हियरिंग एड नहीं लाए, आपको पहनना नहीं है, शर्म आती है, किसको बताते भी नहीं है, तो क्या होगा कि कोई आपके साथ बात करेगा 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर आप पता नहीं कि क्या करते हैं, तो वो आपके साथ नहीं करेगा। उसको ऐसे लगेगा कि वो सुनते नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता मैं उसके साथ बोलती हूँ, और आपको अंदर क्या होता है कि उसने क्या किया, क्या बोला, मैंने तो पता नहीं चला, तो मगज में इससे राउंड एंड राउंड होता है ना। तो ये सारी एक की बीमारी नहीं है। जब भी मैं टोक देती हूँ और कोई भी देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वही आपको सब होगा। ओके, so I'm just saying that all this thing goes for anything, business, yeah. And games करो आप, थोड़ा इधर आते हैं ना तो हम गेम करते हैं, माइंड गेम करते हैं, धनजी भाई के साथ खेलते हैं, कार्ड्स करते हैं, सुडोको ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, तो वो सब एक्टिविटीज है। ओके, so really simple. If your brain is healthy, your life is healthy. It all starts here in your brain.
Yeah, so it's not just your body to keep healthy, you need to keep your brain healthy, just the same as your body. Water is very important. Your brain is 70% made of, full of water. If you get dehydrated, sometimes you can get a temporary dementia. It's called delirium. You might have heard of that. So it's like you've got dementia, but when you put water back in, it all comes back. It's because you haven't had enough water. The water is really, really important. Keep up your physical and your mental activity and keep up your social connections. It's the most important thing. And just those, that contact that you have here with your family, with anybody else, it's right up the top. It's the most important thing. Now, how much time do we have left? So maybe another 5 minutes Okay. for talk, and then we will Yes. have maybe 10 minutes for the questions. Thank you. I just want to know, so I'll focus on certain So things. this- Yeah. this job. Could have been dementia, or some of the symptoms or things that might be happening. So it's important to think about these and not always think about just the memory. If I can explain something about your memory, it's normal as you get older to forget things. That's okay. Everybody does it. You misplace your keys or whatever it might be. You go into a room, why am I here? And then you go back and you come back again. That's okay. If it's happening all the time, not so good. But if you pick up your keys and you look at them and you say, what do I do with these? Then that's a problem. Because that's the way your brain is not understanding what the keys are for. It's then can affect things like driving. If you get in the car and you go, what do I do here? How does this work? That can be a problem. Not so much forgetting where to go. Because sometimes we get busy, you've got a lot of information in your brain, you don't, maybe you don't take things in as much. So one of the other ladies I work with, she talks about your brain being like a filing cabinet. And sometimes you put the files in your brain when you were a little girl, little boy. Those memories have been in there a long time. You know how to get to those memories very quickly. When you get older, your memory, you're like, oh, where do I find a space for this new memory? Sometimes it's full. You've accumulated a lot of stuff over your life. So it's natural and normal to find a new memory doesn't come back to you as quickly as an old one. Does that make sense? Yeah. But some other things can be symptoms of dementia. So if you've lost interest in things you used to do, that's not a good sign. If you used to love cooking and now you say, I don't want to do that, I can't be bothered. That's something you need to, think about. Is there something that's causing that? If there's some problems. Things like when you used to be able to, say, cook. So when I said before my mum had dementia, she was a very good cook. And I didn't live in the same state, so I lived in Queensland and she lived in Melbourne. And I went to see her maybe 2 or 3 months since the last time. And when I was a little girl, she could cook for 100 people. She'd know and she'd shop and have it all perfect. This time I came and she tried to cook me lunch. And all I could see was she was walking around the kitchen. She didn't know where to start. She couldn't work it out in her head. So she had things starting here. She didn't get the plates out. She didn't know how to chop things and put it all together to make a meal. And that's when I said, this is not okay. So these are some things to think about
And the reason why a diagnosis is sometimes a good thing is because there's things you can do to make that person's life easier if you know that there's a problem. Because we don't want to make people who have got the problem feel bad for having the problem. We want to support them. But if we know there's a problem, then we can understand that better. So it's important to know if there's a problem. Sometimes if it's not affecting them in a general sense, it's okay, that's fine. But if it is, and people are getting frustrated or angry with the person who's got the problem, then maybe we do something about that for the people around them, because they can't do anything now. That's the problem is there, it's not going to go away. So that's something to be mindful of around that. If you get the diagnosis, then look into some ways to get some help, and so you can better understand how the person's feeling. I've got some things that we could look at, but we're going to run out of time today. But what I can do is send through some things. There's some things, if you are happy to go on the computer, you can watch some videos. You can find out what it feels like from a person who's living with dementia. And then it helps you get a better understanding. And then you can become what they call a dementia friend. So you know that you understand from someone else's experience what it might feel like. So you can support that person better. There's just a couple of things I want to just mention before we finish. Sorry. They're the videos, but we'll come to them later. Okay. Really, really simple things to remember. If you are living with someone who has dementia, or you're visiting, or someone's auntie, grandma, someone has dementia, even if they're not diagnosed but they're showing things are a problem, we have to remember the person that lives with dementia, they can't help how they are feeling or what they are doing. Their brain is broken, it's not working how it should. So there's nothing we can do to make that better, but we can accept this is how they are now. So we don't want to always think about who they used to be, because that's sad for them as well, isn't it? They sometimes know that they're different now, but yet they're still that same person. They might not say the same things, but inside they're still that person. So we have to take some responsibility there. We have to be the calm one. We have to be the patient one. And we have to be the kind one. Even if they're not being kind to us, we can still be kind to them. Because they feel that, even if they can't say it. They know if you hold their hand, and you don't ask anything of them, you just sit and you be in the moment, that makes someone feel calm, even if you don't have dementia, doesn't it? So these things we can still do. We can still accept them, include them, and just be with them how they are, and just love them for who they are at that particular moment. It's really important to remember. But like I said, I will send through further information and ways that you can go online, look through the videos, and then, feel it, experience it, kind of a bit like for yourself as well. So the videos are people that live with dementia, and they were asked questions about how they feel, and then they talk about that. So, but we've run out of time. No, that's okay. I think we would still like to have a few question answers. Of course. Yes. Because I think people have more or less grasped everything that is being said. Right. We have to hold few people to hold back. So we'll start with Chinmay. What is the first sign? The first sign
sign is different depending on the type of dementia. So sometimes it's memory, but sometimes it's not. The best way to think about it is if you can't, or you're having problems doing things you used to be able to do well. So again, even if you have problems walking, sometimes that can be a sign. Problems, navigating your way, like you used to be able to know how to walk from your house to your grandchildren's house, and you can't now remember the way. So it's problems that get in the way of everyday life, not here or there, but constantly. If you're having problems doing things you used to do, does that kind of make sense? But not always the memory. You have a habit of neglecting some comment all the time. Yes. Can it lead to dementia? It's probably visible. So these are actually things that would happen because the person's already got dementia, maybe. Because you can't necessarily, if you just, not taking everything in and you're ignoring people or not listening, they're signs, they are some symptoms. So yes, it's possible that could be a sign, but also it could be more of a hearing impairment or, processing. Do you know the word processing? Like, the task starts here and it ends there. So if they're having trouble processing things, it's often a sign of dementia, but you can go and get tested. You can find that out. There are, if anyone had the little bags, the little white bags, there's a little checklist in there, and there's some of the things they ask you. If you're having problems with this, there's 20 questions, and if you tick a lot of them, then you should go see your doctor and find out. But it could be something else. That's why it's good to know. Okay, let's move on. We've got three or perhaps more questions. But just going back to the material, Yes. you have to supply a bit more. Absolutely. So yes. I guess a lot of people could not get it. So just a show of hand, आप में से कितने लोगों को चाहिए ये जो white bag वगैरह जो भी information है? So I think we need at least 15 or 20 more, if possible. Of course. Okay, now we'll move on to the question. Kiran bhai. Whether it is a matter of the chemical imbalance? Chemical imbalance is more to do with depression. So you'll be putting the chemicals back in. Just like, say, with diabetes, you need to take insulin for your body to work. So sometimes, and this is, not a medical kind of understanding, because I'm not a doctor, but things like depression, some of the medication helps to put that back in your brain, just like insulin puts that back in your body. But it's different for everyone. But yes, all of these things, if they're not addressed, can make your risk higher. So if you can treat that, you reduce the risk later on. Haji, Kapoor Sahab. Is that disease curable? Is the disease curable? No, not yet, but lots of people are working on this. So all across the world, there are researchers, there are, people at university, they're looking into all of the things and to hopefully find a cure. At the moment, some of the research and the testing is around trying to flush out the plaque. So the plaque that's sticky, so when you have heart problems, you can sometimes, flush that out. They want to try to do that in your brain, but it takes a long time. At the moment they say it's 17 years from the start of research to actually achieving something out of that research. It's a long time. But now there are things some people would be eligible to get a blood test to see if you have what they call markers in your blood.
that again increase your risk. But not everybody is eligible because you have to have a strong connection. If somebody gets dementia, will it continue to increase or can it be stagnated at some point? Yes, it can be stagnant. Yeah, it can stagnate, And yes. can it be reversed? You can't reverse it, but you can, what would we call it? You can fire up other parts of your brain. If this part is damaged, you can fire up a different part to sort of compensate for that one. So that's, again, there's people that live with dementia that are at university. You know, they're still learning because they've worked out a different way to learn. So it's not all bad news, and it doesn't all go the same way. Some people, yes, they get a damage here and they stay like that for the rest of their life. Some people get damaged there, they die a year later. It's all different, but you can reignite different parts. Nowadays they say your brain is like plastic. It's not static. So yeah, this part, okay, it's a bit down, this part can come up and can move around. Does that make sense? तो इसमें जो मेन क्या है कि भाई आपकी एक्टिविटी एवरीडे योगा डू एवरीडे एंड द प्राणायाम वी आर डूइंग द प्राणायाम मेनी वे अब धीरे धीरे आप करते जाओगे यदि आपके अंदर भूख है तो भोजन देने वाले बहुत सारे हैं यदि आपके अंदर योगा और आपकी बॉडी के अवेयरनेस के लिए कुछ भूख नहीं है अभी क्या जिक्र करे अभी तो एज हो गई बस तो भूल जाओ यदि ऐसा मन में मान लिया अभी तो बुढ़े हो गए अभी तो मरने ही वाले हैं छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा बट इफ यू आर कीन इफ यू आर हंगर टू नो मोर अबाउट योर बॉडी देन योगा प्राणायाम वी हैव many helpers to do this and helping to you and I now start to introduce in our different centers not in this center but in our different center we are doing many more time ago. That's why we started to introduce your body structure, your inner body structure, your bandhas, your chakras, and more of that. So we have the 7 chakras in our body, starting from our Muladhara to our brain. How to do the connect to each other. So this way we start in Ishwa Center also. Now one thing I tell you, this is very simple. आपके फोन में in your phone is a many contact. In your phone is a many contact. But you are not connected. You are not connected. When you connect someone, then you call them, you meet them, you talk with them, then you will be very happy. Similar way in your family. We are Indian, living 5, 7, 8 people in the house. Okay? But according to the countries and according to the environment and all this happening, we are slowly disconnected to our families. आपको ये सुपर है सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं
दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। अभी आपको आंखें बंद करके सुनिए, इसी प्रकार से मानसिक भावात्मक आहुति देनी है, ठीक है। 7 गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेणामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेणामृतात् स्वाहा। इदं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं, तो अंतिम मंत्र है पूर्णाहुति का। वो पूर्णाहुति मंत्र पूरा होने के बाद आपको स्वाहा करना है। मिला? पूर्णाहुति मंत्र के बाद स्वाहा कहो तब स्वाहा कर। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। इदं पूर्णं भवतु स्वाहा। इदं पूर्णं भवतु स्वाहा। इदं पूर्णं भवतु स्वाहा। Australian national anthem to be followed by the Indian. Australians all let us rejoice, for we are one and free. We adore the salt and wealth of joy, our heart is covered by sea. Our land of bounty, riches gift of beauty, rich and rare. In peace we spake, there every state that once was Australia fair. In joyful strength and let us sing, that once Australia fair. Beneath the radiant sun and cross, we'll join with hearts and hands to make this common
across the sea. Here boundless plains to share. With courage let us all combine to advance Australia fair. In joyful strength and let us sing, advance Australia fair. भारत का राष्ट्रगान भारत जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनमन मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है भारत माता की जय वंदे मातरम। क्या आप में से कभी किसी ने शायद सुना नहीं होगा, तो हम ज्यादातर ये संस्कृत गीत का उपयोग करते हैं। आप सब लोग बोल नहीं पाते थे, इसलिए आज ये नहीं हो पाया। फिर भी मेरी बेटी आई है, वो भी अपनी माँ के प्रति ये संस्कृत भाषा का जन्मदिन पर क्या गीत गाना वो गा के सुनाए। जन्मदिनमिदं आय प्रिय सखी सन्तनोतु ते सर्वदा मुदं जन्मदिनमिदं आय प्रिय सखी शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदम् आय प्रिय सखी शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। थैंक यू जी। अभी भोजन करने से पहले भोजन मंत्र करते हैं। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, विश्व धर्म की सेवा में। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Feel free to come and discuss detail. Thank you.